So hi guys, welcome to the next video in which we'll be discussing about legal reasoning and judicial creativity at the same time. I feel that this topic is less relevant for CLAT PG, but at the same time, if you understand this particular topic, it'll help you in respect to the differential prospects and differential questions which will come in the university exams. Right? But if you understand this topic to the fullest, it'll give you a great base, which is very much required. So we'll follow the drill once again. We'll start with explaining in the page, right? So let's start. First of all, what is analogical reasoning and legal reasoning and judicial creativity? Under legal reasoning and judicial creativity, what we'll be discussing are points of understanding analogical reasoning, distinguishing overruling, and purposive adjudication, right? So first is analogical reasoning. Analogical reasoning is a core form of legal reasoning, especially in common law systems. Right? It is the process of drawing a conclusion about a new case by comparing it to a past case that shares similar and relevant facts. Right? So, in respect to analogical reasoning, I hope it is visible. Yes, it is. Logical reasoning. Right? It forms the core of legal reasoning, LR, right? Especially in common law systems. Remember that. And apart from that, how it works. A lawyer or judge finds a precedent. What is the process like? Lawyer or judge finds a precedent first of all. Precedent ढूंढता है, right? And argues that the new case is like the old one, right? जो नया case है, it is straight away like the old one, right? That is what the lawyer argues in the court as well. There are new case and old case and old case. What the lawyer argues that the new case is like the old one. Right? So, and then there is a creative element in it. Analogical reasoning, it is not a mechanical process, right? There's a creative element in identifying which past case is the most relevant, and the lawyer try to articulate that while differences there are certain differences in respect to the facts, but the core reasoning which will come into place while we are uh, arguing in respect to a particular case is the same, that the core remains the same, that the legal argument remains the same, the question of law remains the same. That is where the creativity kicks in, right? Creativity is at that point, right? So those are a few prospects, and let's see. Understanding analogical reasoning, distinguishing between overruling एंड परपसिव एडजुडिकेशन. देखिए, ओवर रूलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस में समझाया कि ओवर रूल कैसे होती है एक चीज. ओवर रूलिंग को हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं जज हूं. मैंने एक जजमेंट पास करी कि सामने वाले इंसान को 10 लाख रुपए मिलने हैं प्रॉपर्टी के. ठीक है. लेकिन उसको लगा होगा कि 10 लाख कम है, या किसी को लगा होगा 10 लाख बहुत ज्यादा है, तो वो एक और पिटिशन फाइल करता है हायर कोर्ट में. फॉर एग्जाम्पल, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ और उसने फिर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पे अगर अगर उसने पिटिशन फाइल किया, इफ नॉट वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन फाइल कर सकता है. उसके अंदर व्हाट विल हैपन
कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट को आर्ग्यूमेंट अलग लगे, आर्ग्यूमेंट अलग तरीके से प्रेजेंटेड लगे, क्या पता एनालॉजिकल रीजनिंग वकील ने अलग दी हो इस बार, क्या पता कोई नया वकील आ गया हो, ठीक है, तो उसकी ओवररूलिंग हो सकती है एक पर्टिकुलर लीगल प्रेसिडेंट की, फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एडजुडिकेशन। दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है। What are the comprehensive notes? Judicial reasoning uses precedent techniques, of course. For example, जो मैंने आपको prospects बताए थे, रेशियो एक्सट्रैक्शन। रेशियो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? रेशियो डेसिडेंडी को एक्सट्रैक्ट करना, फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना, इंक्रीमेंटली एक्सटेंड करना एक पर्टिकुलर फैक्ट को। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 लाख वाला एग्जाम्पल दिया, क्या पता जो नया वकील आएगा वो अलग अलग चीजों के बारे में आर्ग्यू करे, कि पहले वाले वकील ने फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट नहीं जोड़ा, क्या पता जो नया वकील है वो नया फैक्ट जोड़े, एक्सटेंड करे एक पर्टिकुलर फैक्ट को, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल एक्सटेंशन। ओकेजनल ओवररूलिंग हो सकती है फॉर द करेक्ट पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन, which is eventually known as purposive adjudication. Right? Indian courts mix textual, structural, and value-based arguments under constitutional supremacy and morality. केसेस वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, घूम फिर के यही चीज आ रही है, ठीक है। सेम थिंग्स वंस अगेन, राइट। डोरा, distinguish overall ratio and analogize. I don't think so it's required as such, but I feel that it's a very easy thing to understand. It will help you in your university examinations. So that is why I'm making you learn it. लर्न तो क्या ही बता रहा हूँ, या तो विन होगा या लर्न होगा, बट विन कराने की तैयारी करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताइएगा, खराब लग रहा है तो भी बताइएगा। सो ओवररूलिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रेसिडेंट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स मैंने आपको ये समझा दिया है। डिस्टिंग्विशिंग अलाउज व्हाट? डिपार्चर विदाउट ओवररूलिंग। पर्पसिव अप्रोच क्या सीख करती है? एडवांसमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस। एक पर्टिकुलर पर्पस जो है स्टैट्यूट का वो बढ़े, यही तो चाहते हैं सब लोग। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया है, 141 भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, क्या था कमेंट में लिखिए। एक्टिव रिकॉल वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एंड लाइबिलिटी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। वेरी सिंपल क्लास, बहुत ही छोटा वीडियो था, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ चेंज करना है तो बता दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू गेट अ ग्रेट डे। I hope you have a great day ahead. Thank you. Bye.